हेलो गाइस, आज हमारे साथ हैं यशी, जिन्होंने अभी अभी स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट का जो इंटरव्यू है वो क्रैक किया है। आज इस वीडियो में हम उनसे एक मॉक इंटरव्यू लेने वाले हैं, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या क्या वहां पे पूछा जाता है। तीनों राउंड्स के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मिक्स किए गए हैं, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। गाइस, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाला हूँ, जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। Yashi, how are you? I'm fine. How are you? I'm also fine. Let's start the interview. Yashi, introduce yourself. My name is Yashifreya. I was born and raised in Narkatiyaganj, a place in West Champaran, Bihar. And all my primary education happened in my hometown only. For 10th grade, I moved to Muzaffarpur. There I did my 10th grade from Doon Senior Secondary School. After that, I did my 12th as well from Muzaffarpur only. And then for my graduation, I again came back to my home and I stayed with my family uh, during my graduation, and I graduated in English literature and language. After that, I pursued a diploma course in elementary education. That was a teacher training program where I was given the opportunity to teach in government school as a part of internship. After that, I started teaching. I taught in a coaching institute where I used to teach as well as I used to counsel the students. The job was mentoring almost. I had to communicate with the new students and tell them, explain them like the process to enroll, and I had to communicate with parents as well during that institute. Uh, yeah. Okay. What do you know about the job profile you had applied for? It's basically a mentorship job where I have to communicate with the students, listen to their queries, and resolve them. Other than that, I have to keep the record of their graph, like whatever they are performing, their academic uh, performance, and I have to give the proper information to the parent as well. And in terms of query, I have to hear the query of both parent and teacher, parent and student, and then I have to resolve that. Okay. What do you know about Byjus? Byjus is fastest growing edtech company. It started in 2011 by Byjus Ravindran, and till 2015 it was in offline mode. In 2015 it turned online, and in the first year of turning online, it was having 1 million downloads, and till now it's having, I guess, 19 million. I'm not sure about it. A very large number of downloads. And yeah, it's giving the Okay. facilities of like online education. Why do you want to join Byjus? As I said, it's fastest growing edtech company. So I'm a teacher and I'm a mentor or teacher. Like, so I'm expecting a very settled career in this field only. That's why I want to join that. Okay. Okay. Tell me your 3 qualities which you think which are fit for this job profile. I'm very good at communicating. My communication skills are good. I'm very patient. I am good at hearing people, listening to their queries and solving it as well. I'm very solution oriented most of the time. I don't pay attention to what problem is going around. The priorities. I'm very problem solving. I have a positive attitude. I'm confident. There's a lot more that to the profile. Okay. Yashi, how will you tackle a parent or a child who are not willing to take the course because of the high fees? Okay, if a parent is not like willing to purchase the course because of high fee, first of all, Byjus is having so many features. I'll try to highlight the features. I can ask the student a few questions that he may or he might not be able to answer. In case he would not answer, I can emphasize on the fact that your child requires something
to enhance in academics. He can do, but he's not having the proper mentors. So, and in case the child answered, I can highlight that your child is already doing very well. And with our course, like our course is so much story-like. There's so many features that I can highlight. That the classes are very interactive. The student will be engaged with it. So all these factors I can highlight and convince them to purchase the course. And one more feature that Byjus is having, if the student is not, if they're not satisfied, the performance is not enhancing, then we provide money back as well during for a very short time, period of time, like 10 to 15 days, you can get the refund. So this is very attractive feature. Okay. Okay, Yashi, why we choose only you for this particular job? Like considering my experience in the same field, I have been engaged with teaching, with communicating. I have been surrounded with students, listening to their queries. This has been a part of my life for quite long. So I'm very habitual, and I will very easily adjust in the. I will fit in the job profile very well. Yeah, and I think I have that many qualities that I deserve a very fair chance there. Yashi, what do you think? Which is better, online studies or offline studies? According to me, online is much better than offline. Okay, why so? Because online is providing you several features, like if the child is not having, child belongs to a area where he's not having the access of quality education, he can have it there. Other than that, even if the child is in city, still the kind of videos and the kind of like online is too much technology integrated. So this integration with the technology is making it much better than offline. And like if the child is not able to attend a class, later on he can have the access of all the lectures, which is impossible in any offline class. So there are so many things which makes online much better. Yashi, tell me something which is not mentioned in your resume. Something which is not mentioned in my resume is that I'm very lively, energetic, and fun-loving. That's my personality. So when I communicate with children, I am very lively and active. So that, and I'm very spontaneous with humor, creating humor. That helps me to connect with the student, and they also feel a special connect with me. And the impact of my communication is very long lasting because of this. They hardly forget, like, because of, so I like this thing about me. Yashi, if a scenario comes where a parent just lost his job and wants her child to just discontinue with Byjus course, how will you convince that parent to just continue with the course? Okay, if I get such a situation where the parent is not willing to continue with Byjus, first of all, we have to consider the fact that if the parent has enrolled at any point of time, it means they're capable of like continuing, like they can afford it somewhere. So I'll ask parent a very direct question, like if he's saying that he lost his job, it's a very temporary problem, losing a job, like he will get another one. So I'll ask the parent, like, can you tell me some reasons why you lost your job? Were you fired? It might not sound very soft, but asking such question, either he will answer me the reasons, or he'll say that I don't want to answer. This is my personal thing. You can't come in my personal space. So I can highlight the fact that, see, today you lost your job because might be you're not fit for the company. Company has not fired all the employees. So you are not suitable for them. You are not very useful for them. Somewhere you're lacking some skills. So do you want the same for your child in his future or in her future to struggle this way? So right now your child is having the access of something which will develop the skills, and that will help him to
to not face such a situation. So this is very like hitting, like that will hit on his mind that yeah, somewhere that's right. Other than this, I can highlight the fact that child is having the access of this product or this facility or this kind of quality education, and suddenly if you discontinue, he will feel that lack and void in his life or in his routine, that will make him sad and mentally unwell, or make him feel humiliated that I can't afford. Such feelings are not good for the mental health of the student. To protect it, protect the child from such things, we should continue with this. Okay. Yashi, what all languages do you know? I'm fluently, I can speak English, Hindi, as well as I know some regional language like Bhojpuri. I know a little bit of Bangla as well, but fluently I can speak English and Hindi. Okay. You have to communicate in Hindi also while communicating with parents and the child. So you must answer Yeah, our upcoming questions in Hindi. Okay. My next okay. question to you is, as I can see your resume, you have the teaching experience. Why do you don't want to join teaching and come into a mentorship job? Have to answer this question in Hindi. Yes. ओके यस मेरा एक्सपीरियंस जो है वो टीचिंग में है, बट अलोंग विद दिस लाइक जब मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाती थी तब मैं बच्चों से कम्युनिकेट करती थी, उनकी काउंसलिंग करती थी, जो भी नए बच्चे आते थे। तो कंटिन्यूअस ये प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व रही हूँ, कम्युनिकेट करना या मेंटरशिप करना, पेरेंट्स से बात करना। तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है मेरे लिए या बहुत ही अलग है कुछ जिसे मैंने कभी नहीं किया है या फिर जिसके साथ मैं अनकंफर्टेबल हूँ, जो मेरे लिए नया है। तो मैं बहुत कंफर्टेबली इस मेंटरशिप वाले को भी कर सकती हूँ। Okay. Okay, Yashi, what's the difference between a teacher and a mentor? I have to answer this in Hindi or English? Hindi only. ओके टीचर जो होता है वो किसी सब्जेक्ट को पढ़ाता है, किसी एक पर्टिकुलर विषय पे ध्यान देता है, उसे एक्सप्लेन करता है, एक सब्जेक्ट या फिर कुछ भी हो सकता है, बट वो एक चीज को सिर्फ पढ़ाता है, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ सिखा देना बच्चे को। बाकी के फैक्टर्स से टीचर का कोई भी मतलब नहीं है। बच्चा कॉन्फिडेंट है या नहीं, बच्चे की मेंटल हेल्थ कैसी है, बच्चे को ठीक से बैठने आता है कि नहीं, फोकस्ड है कि नहीं, अगर वो सीख नहीं रहा है तो क्यों नहीं सीख रहा है, ये सब टीचर की प्रॉब्लम नहीं है। टीचर को सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है और उसको रिजल्ट चाहिए। मेंटरशिप ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देता है, ये path giving है। यू हैव टू डेवलप द चाइल्ड, इट्स लाइक डेवलपिंग द चाइल्ड। तो बच्चे का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो मेंटरशिप इन्वॉल्व सच थिंग्स कि व्हाई द चाइल्ड इज नॉट डेवलपिंग और कैसे उसे हम डेवलप कर सकते हैं। Yashi, how will you handle a angry parent if a parent calls you and start abusing you and using some language which is not proper? How will you handle that parent? Okay, if a parent is angry or furious, there must be some reason behind it. Maybe he has gone through some inconvenience which has made him angry. So like as a part of my job, it's my duty to resolve the query. He's angry, this is a factor, but I can't reply him in an angry manner. I can request him or her. If it is very furious, I can request politely to be calm. Even if they are not being, as a part of my job, I'll listen calmly to what their problem is, and I'll try to give a very solid and quick solution to the problem in order to calm the person down. If the work is done, if the query is resolved, of course, that will calm them down ultimately. So that's the way to handle such parents. Okay. Yashi, what if a child asks you some academic questions? Will you able to handle them? Yeah. As we're having teachers for this, still, if a child asks academic question, I have a good knowledge of all the basic things, as I have been involved in teaching as well, so I'll be able to ask them.
Okay. Okay. Yashi, tell me what photosynthesis is. Okay, photosynthesis is a process in which plants prepare their food using sunlight. The part of plant that prepares food is leaf, which has chlorophyll. So, plant leaf takes carbon dioxide from the atmosphere, and uh, water reacts with water to form the C6H12O6, which is glucose, which is energy, and oxygen, which we take, like we humans, we consume. Okay. Process of plants making their food. Answer this question now in Hindi. What is trigonometry? Yeah, I'm more comfortable in English, but yeah, still if you insist, I'll answer in Hindi. Trigonometry का मतलब होता है कि त्रिगो का मतलब होता है ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज का मेजरमेंट. तो हम इस चैप्टर में डील करते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स से, और इसमें बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक साइंस होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉस सेक, कॉस सेक, और सबकी वैल्यूज होती है. तो जो हमें डिटेल में पढ़ना होगा, तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स है. Okay. Okay. Yashi, in this particular job, you will have some daily targets. You have to call around 50 calls parents per day, and you have some basic calling targets also, which you have to complete. If you are not able to complete those targets, your salary will be deducted for that particular day. Are you good for this? Is that fine for you? Yeah, if I'm not able to meet my targets and then my salary is deducted, I'm fine with that. Okay. What if your manager asks to work overtime after 8 also, he asks you to work for till 10 p.m. Will you work? If it's the need of the moment and if the manager is saying there must be some reasons, so I will. Okay. Okay. Yeah. That's it, Yashi. We will share our feedback with you. Okay, thank you. हाँ, तो गाइस आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से ये जो यशी हैं उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया. आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए फ्रॉम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. जो तीनों राउंड ऑफ इंटरव्यू में तीनों के हमने जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स कर दिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीट किए जाते हैं. मोर और लेस यही सारे क्वेश्चंस आपसे इस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे. गाइस, अब बात करें कि आप यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करें जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा. गाइस, वो देख रहे हैं कि कुछ अगर आपका टीचिंग बैकग्राउंड हो तो वो ज्यादा अच्छा है इस जॉब के लिए, क्योंकि ये एक तरीके की मेंटरशिप जॉब है जहाँ पे आपको मेंटर करना होगा. कुछ प्रॉब्लम्स और क्वेरीज होंगी स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, तो वो आपको रिजॉल्व करनी होगी. गाइस, तो यहाँ पे आप ना अपना 2 इयर्स का एक्सपीरियंस डाल सकते हैं. फ्रेशर है फिर भी आप 2 इयर्स का एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा टीचिंग में. टीचिंग में अगर वो पूछें कि कहाँ पे टीचिंग किया है तो आप वहाँ पे डाल दीजिएगा ट्यूशन क्लासेस आप अप टू 10 स्टैंडर्ड लेते हैं. इससे गाइस क्या होगा, आप वहाँ पे एक अपना एज ले आएंगे कि आपने टीचिंग किया है और आप मेंटरशिप कर सकते हैं. बाकी सारे क्वेश्चंस आपने देखा कि किस तरीके से आपको आंसर करने हैं. गाइस, अपने रेज्यूमे में टीचिंग जरूर मेंशन करिएगा फॉर 2 इयर्स, जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्यूशन क्लासेस आपने दिए जिसका आपको कोई सर्टिफिकेशन या फिर कुछ भी देना नहीं होता है, जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा. जो चांसेस है सिलेक्शन के वो इंक्रीज हो जाएंगे. गाइस, अब हम बात करें आप अप्लाई यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं. उन लिंक पे जाकर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा गाइस एक और जो हमारे साथ अर्पित थे, उन्होंने भी ये जो इंटरव्यू वो क्लियर किया था, उसका भी उनसे के साथ भी हमने एक वीडियो शूट किया था जिसमें कि उन्होंने सारी डिटेल्स हमें बताई थी. उनसे हमने डिस्कशन किया था, वहां पे मॉक इंटरव्यू नहीं लिया था. उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं. इस जॉब के डिटेल्स के बारे में भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आपको जाके देख सकते हैं. अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो गाइस ये 5.5 LPA पर होने वाला है, 5 lakhs पर एनम, जिसमें कि 4.75 आपका फिक्स होता है और 75,000 आपका जो है वेरिएबल होता है, जो कि एक बहुत अच्छा सैलरी है. गाइस, लोकेशन की बात करें तो आपको 15 डेज ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर जाना है. उसके बाद आप बेंगलोर या फिर दिल्ली ऑफिस में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप प्रेफर करें. इसके अलावा गाइस, अगर आप सही में चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम 100% अश्योर करते हैं आपको कि हम क्या करते हैं गाइस, छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं अपने इंटरव्यू में, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है. लेकिन अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो हम आपके वो सारे इश्यूज रिजॉल्व करेंगे, आपका इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, देखेंगे आपका इंटरव्यू 100% शेड्यूल हो जाए और आपका जो इंटरव्यू 100% क्लियर हो जाएगा. इस इंटरव्यू और हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी जो फीस है वो भी आपको आफ्टर
योर सिलेक्शन पे करनी है, आफ्टर योर फर्स्ट सैलरी पे करनी है। आपको सिलेक्शन पे भी पे नहीं करनी, जब आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी आपके अकाउंट में, जब आपको फीस पे करनी है, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है। ऐसा नहीं है कि हम आपसे पहले पैसे ले रहे हैं और फिर जो हम चीज बोल रहे हैं वो आपको डिलीवर नहीं कर रहे हैं। गाइस, आपको आप जो बोल रहे हैं वो सारी चीजें डिलीवर होती है, आपको पे करना है अपने फर्स्ट सैलरी पे, जिससे कि आपके ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा। अगर आप ऐसा फ्रेशर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपके ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा। गाइस, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एक मोबाइल नंबर, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है 7060987732। गाइस, इस नंबर पर तभी कांटेक्ट करिएगा जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहें। कोई भी वीडियो से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई भी इशू आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी टीम एक्टिवली वर्क करती है और आपके जो क्वेश्चन है उनको आंसर करती है। मैं पर्सनली भी यहाँ पे आंसर करता हूँ। आपकी जितनी भी क्वेरीज है वो सारी रिजॉल्व यहीं पे की जाएंगी। आप कॉन्टेक्ट सिर्फ जब भी करिएगा जब आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना हो। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक धमाकेदार जॉब ओपनिंग के साथ। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। गाइस, आज के लिए बस इतना।